Hello learners, welcome back. So I'm back with another video and we are going to discuss a new topic from education subject, and which is an important subject which students study when they are doing the BA, and it is also important for the student who are doing BA education. In the previous video, we have talked about that what is education, what are the different aims, objectives, nature of education. Today I will discuss Vedic education कि वैदिक एजुकेशन क्या है और क्या क्या कैसे पढ़ाई जाती थी, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट थी. तो आज की वीडियो में मैं बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगी, बट आई विल गिव यू अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द वैदिक एजुकेशन, जिसको सुन के आपको कुछ जो आपके डाउट्स हैं वैदिक एजुकेशन पे वो क्लियर हो जाएंगे. इनफैक्ट यू कैन यूज़ दिस इन्फॉर्मेशन टू राइट अ शॉर्ट आंसर ऑल्सो इन योर एग्जाम, and this can be used as an introduction part while you're writing a long answer, and it can be written as a full thing when you're writing a short answer. So let's start. So first of all, let's understand the term Vedic. So I think most of you know. Whoever do not know, let me clarify one more time. See, Vedic means Vedas, right? So ये word कहाँ से आया है? ये word हमारा आया है वेदास से. सो एंशियंट इंडिया का जो सबसे पुराना टेक्स्ट माना जाता है वो हम वेदास को कंसिडर करते हैं. अभी तक की जितनी भी रिसर्चेज हुई हैं, जितनी भी स्टडीज़ हुई हैं, दे हैव प्रूवन दैट द वेदास आर द मोस्ट एंशियंट टेक्स्ट नॉट ओनली इन इंडिया बट इन द एंटायर वर्ल्ड. ओके, एंड देयर आर 4 वेदास. सो लाइक ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, अथर्ववेदा एंड सामवेदा. इन चारों की स्टडी जब हमारे एंशियंट टाइम में बच्चों को कराई जाती थी, कोई भी इंसान करता था, तो उस चीज़ को हम कंसिडर करते हैं वैदिक एजुकेशन. और एंशियंट इंडिया में सिर्फ एक यही फॉर्म ऑफ एजुकेशन था जिससे कि लोग एजुकेशन लेते थे. अब बात करते हैं कि बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सीज़ हैं, बहुत सारी कॉमेंट्रीज़ हैं कि वैदिक एजुकेशन क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों पढ़ाई जाती है. लेकिन इसमें एक जो कॉमेंट्री है, सायन की कॉमेंट्री है, ये कॉमेंट्री काफ़ी ऑथेंटिक मानी जाती है. इन्होंने कंसिडर किया है कि जो वेदास होते हैं, दे आर द लर्निंग थ्रू विच वन पर्सन एक्चुअली अंडरस्टैंड द फिलॉसफी ऑफ लाइफ. ही इज़ एबल टू डील विद अप्स एंड डाउन ऑफ द लाइफ. ही इज़ एबल टू अंडरस्टैंड द लाइफ बेटर. ठीक है. और हमारे एंशियंट इंडियाज़ में और वेदास को अगर कंसिडर करें तो ह्यूमन लाइफ को कभी भी अनपर्पसफुल नहीं माना जाता है. ऐसा माना जाता है कि हर एक ह्यूमन लाइफ का कोई स्पेसिफिक पर्पस होता है जिसको अचीव करने के लिए वी ऑल हैव केम डाउन टू दिस अर्थ. So what do Vedas teaches? They teach about all these things, that how we should live, what are the things we should do so that we can attain this purpose. So I hope आपको ये तो थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा कि वैदिक एजुकेशन क्या है और ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया और इसका मेन थीम क्या है, क्या ये पढ़ाते हैं और क्या इसका एक मेन पर्पस है. ठीक है. Moving forward, now we will discuss that what were the things which were considered very important during the Vedic times, and it was taught to the students who were taking the Vedic education. And before, I also discussed about the commentary which is considered very authentic, the commentary of Sayan, Sayan. So you all must be having a question in the mind that in what book this is mentioned. So Sayan's, the text in which Sayan has mentioned this is Krishna Yajurveda. In that book you will find the things mentioned regarding the Vedic education. So now let's discuss that what are the major purpose, what are the major things which the human needs to understand if he believes in the Vedic philosophy and he is going forward to take the Vedic education. See, in Vedic times, what is considered the most important thing is like human life. Okay, human life was the most important thing. So what a human has to do in his entire life, how he has to do that, okay, and how he has to connect himself to the outer world. What I mean by the outer world is like the universe, or you can consider God. Culture, philosophy, life, civilization, these things a person understand when he gets the Vedic education. Okay, so these are the things which are considered very important. Next thing which is considered very important is the main motive of every human according to Vedic education is deliverance from the life or deliverance from the cycle of birth and death. ओके, तो अगर मैं इसको आसानी से बोलूँ तो इसको मैं बोल सकती हूँ कि मोक्ष की प्राप्ति, कि कैसे हम इस जन्म और मृत्यु का जो चक्र है इससे हम कैसे मोक्ष प्राप्त कर सकें, ये एक मेन पर्पस होता था. और एक जो थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसिडर करी जाती थी वो थी यज्ञ. सो यूजुअली यू विल फाइंड द स्पेलिंग ऑफ यज्ञ एज YAJNA. सो डू नॉट प्रोनाउंस इट एज यजना, इट इज़ कॉल्ड एज यज्ञ. Okay, the spelling is like that, but you have to say it yajna. The spelling is YAJNA. Okay, so yajna was also considered a very important thing during the Vedic times. So do not believe that it was only considered because rishis used to do that, but it was also proven like in modern times. It was also proven in laboratories, and many researchers have also proved that. So these were the 3 things which were considered very important. Okay, now let's come to that what were the subjects which were taught to the student during the Vedic times and in the Vedic education. So see, first thing which you have to like keep in your mind that during that time there were no process of studying the subject like physics, chemistry. No, they were taught, but they were not taught in the way
how we study them today, okay, like a name under the name physics, chemistry, biology, or something like that. So the main subjects which were taught during the Vedic education is grammar, rhetoric, philosophy, oratory, and how one can pronounce the things. Okay, pronunciation was very important during the Vedic times. So now discuss some other important subjects which were there in the Vedic education. One of them is astrology. Student used to learn about astrology during the Vedic education. They also learn about kalp. कल्प क्या होता है? कल्प होता है टू अंडरस्टैंड द रिचुअल्स विच आर रिटन इन अवर वेदास. जैसे मैंने पहले बताया था, वैदिक एजुकेशन इज द स्टडी ऑफ वेदास. तो वेदास जो हमारे 4 वेदास है, इसमें जो भी रिचुअल्स लिखे गए हैं इनको समझना, इनका प्रोसेस समझना, कैसे ये करे जाते हैं, क्यों ये करे जाते हैं, एंड वाई दे आर डन. ओके, द रीजन बिहाइंड इट, टू अंडरस्टैंड दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द सब्जेक्ट जिसको हम बोलते हैं कल्प. द अदर थिंग विच द स्टूडेंट लर्न इज निरुक्ति. NIRUKTI. Nirukti is understanding the meaning of the word. Okay, so these are the important subjects which a student learn in the Vedic times under the Vedic education. From all the subjects which I have mentioned till now, the most important subject without which none of the other subjects can be learned was logic. Students were taught logic, okay, because if a person is not understanding the logic, okay, he will not be able to relate any other subject. अगर आप इसको समझना चाहते हो तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर किसी को किसी भी चीज़ को समझने में उसके पीछे का रीज़न या उसके प्रोज एंड कॉन्स ही नहीं समझ में आ रहे हैं तो फिर वो पूरे अलग जो सब्जेक्ट्स हैं उनको भी नहीं समझ पाएगा. सो लॉजिक पे बहुत ज़्यादा फोकस दिया जाता था कि कैसे हम बच्चों को लॉजिक पढ़ा रहे हैं. ये कैसे पढ़ाया जाता था? इट वॉज डन थ्रू डिबेट्स एंड डिस्कशन. सो यूजुअली क्या होता था कि किन्हीं 2 बच्चों के बीच में डिबेट या डिस्कशन हुआ एंड द टीचर, द गुरु यूज टू वॉच इट. वो उनको बैठ के देखते थे एंड अदर स्टूडेंट ऑल्सो सिट एंड जस्ट सिंपली वॉच देम, बट द 2 पर्सन आर हैविंग डिस्कशन एंड डिबेट. इस डिस्कशन एंड डिबेट के बाद वो अपने अपने पॉइंट्स रखते थे. जिससे क्या होता है कि दोनों को ही समझ में आता था कि अच्छा ये चीज़ को हम कैसे समझ सकते हैं, और उन दोनों पर्सन के अलावा भी जो उनको सुन रहे हैं बैठ के बाकी स्टूडेंट्स, उन्हें भी इस चीज़ के बारे में अंडरस्टैंडिंग होती थी. ओके, सो दिस वॉज हाउ इट इज डन. इट वॉज नॉट यूजुअली कि सिर्फ 2 बच्चों के बीच में ही हो रहा है. समटाइम्स 2 ग्रुप्स वर ऑल्सो मेड कि ये कि फर्स्ट ग्रुप है, सेकंड ग्रुप है, जैसे आजकल के स्कूल में गेम्स करते हैं, डिबेट्स होती हैं, उसी तरीके से. सो लॉजिक वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट. सबसे पहला जो फोकस होता था वो लॉजिक पे होता था. वंस अ स्टूडेंट इज गुड एट लॉजिक देन ऑल द अदर सब्जेक्ट वर टॉट टू देम. ओके, नाउ लेट्स डिस्कस कि what were the methods of teaching, कैसे पढ़ाया जाता था. because in those time there was no printing press, there was no paper, okay, even like there were no pen and pencil during that time. So writing was like next to impossible thing during that time. Person used to write it, but they used to write it on like leaves, dry leaves, or some kind of handmade paper which was possible to made through leaves also. Okay, so ये सब चीज़ें जो थी बहुत डिफिकल्ट थी और किसी एक नॉर्मल स्टूडेंट के लिए ये सब करना बहुत ही इम्पॉसिबल जैसा था, बिकॉज इट यूज टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम. सो इसका हमने जो, क्योंकि राइटिंग तो जैसा कुछ था नहीं, तो जो 2 मेथड हैं जो जिसके थ्रू वैदिक एजुकेशन दी जाती थी, वन इज़ मौखिक विच इज़ ओरल, और जो दूसरा है मेथड वो है थिंकिंग या फिर चिंतन. ठीक है, ये 2 मेथड थे. तो ओरल मेथड में क्या क्या सिखाया जाता था? ओरल मेथड में सिखाया जाता था कि जो हमारे वेदांस हैं उनके अंदर जो हाइम्स हैं, जो मंत्रास हैं और जो इसके वर्सेस हैं, तो इनको लर्न करना, इनका सही प्रोनाउंसिएशन, इनका सही मीनिंग, ये सब सिखाया जाता था, विच वॉज ओनली पॉसिबल थ्रू ओरल. सो द गुरु यूज टू रिसाइट इट एंड द चिल्ड्रेन और द स्टूडेंट दे रिपीट आफ्टर द गुरु. ओके, सो दिस वे दे actually were able to learn about the hymns and verses of the Vedas. Next thing was, and yes, through this oral method, students were also taught, and they were strictly taught about the pronunciation. It was ensured that all the words were correctly pronounced. जो लैंग्वेज उस टाइम पे यूज़ होती थी वो क्या थी? संस्कृत थी. तो ये इंश्योर किया जाता था कि हर एक वर्ड का प्रोनाउंसिएशन बहुत ही सही तरीके से हो रहा है. अगर जब तक कोई भी स्टूडेंट एक पर्टिकुलर वर्ड में नहीं प्रोफिशिएंट हो जाता था, उसको नया वर्ड नहीं सिखाया जाता था. ओके, सो इट वॉज नॉट दैट उन्हें 1 साल में कोई एक सिलेबस कंप्लीट करना है. हर एक स्टूडेंट अपने एक पेज से पढ़ता था, और जब तक वो उस चीज़ को नहीं अच्छे से कर लेता था उसको नई चीज़ नहीं दी जाती थी. सो दिस वॉज हाउ वैदिक एजुकेशन वॉज डन. ओके, नाउ द नेक्स्ट मेथड. सो ओरल मेथड वॉज यूजुअली फॉर द एवरेज स्टूडेंट, क्योंकि ऑफकोर्स सारे स्टूडेंट्स उसको करते थे, लेकिन एवरेज स्टूडेंट का फोकस ओरल मेथड पे ज़्यादा होता था. एंड द ब्रिलियंट स्टूडेंट, द मोर इंटेलिजेंट स्टूडेंट, दे यूज टू फॉलो द थिंकिंग मेथड और द चिंतन मेथड. और जो बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट होते थे वो एक स्टेप और ऊपर जाते थे, और उनका जो मेथड हो जाता था वो था मनन. मनन इज़ लाइक थिंकिंग इन योर माइंड एंड लाइक कीप क्वेश्चनिंग, कीप आंसरिंग इन योर माइंड टू एक्चुअली गेन द कंप्लीट नॉलेज अबाउट दैट टॉपिक. ठीक है, तो चिंतन का क्या मतलब है कि आपके गुरु ने आपको कुछ पढ़ाया, उन्होंने उसका कुछ एक समरी बताई कि इसका ये इसका इफेक्ट है, इसका ये कॉज है, और आपको उसी के ऊपर अपनी थिंकिंग करनी है. आपका थॉट प्रोसेस उसी के ऊपर चलना चाहिए कि इसमें क्या सही है क्या गलत है. नाउ वी हैव डिस्कस्ड एंड अंडरस्टूड 2 मेथड्स विच वर कॉमन इन वैदिक एजुकेशन. वन वॉज मौखिक और ओरल, द सेकंड वन वॉज थिंकिंग और चिंतन. तो ये दोनों जो मेथड होते थे ऑलमोस्ट सारे बच्चे करते थे, लेकिन जो एक थर्ड मेथड था जो सिर्फ बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चों को दिया जाता था या फिर टीचर को जो यूज़ करते थे, वो था मनन. सो आप मनन को ऐसे समझ सकते हो, इट वॉज लाइक अ रिसर्च काइंड ऑफ थिंग. ठीक है, कि आप उसको ही सोच रहे हो, आप उसके बारे में और चीज़ें इकट्ठी कर रहे हो, उसके प्रोज एंड कॉन्स ढूंढ रहे
हो, उसमें क्या ट्रूथ है क्या नहीं ट्रूथ है उसको ढूंढ रहे हो. सो दैट वाज मनन. आप मॉडर्न डे से ऐसे रिलेट कर सकते हो कि जो बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चे हैं, टीचर यूज टू गिव टू स्टूडेंट अ रिसर्च टॉपिक कि आप इस टॉपिक पे थोड़ा सा रिसर्च करो. सो दैट वाज अ काइंड ऑफ रिसर्च विच हैपन इन वैदिक टाइम्स. ओके, सी ओरल मेथड बहुत ज़्यादा कॉमन था क्योंकि इसको कहीं ना कहीं हर इंसान फॉलो कर रहा था, तो इसलिए हम वेदास को श्रुति भी बोलते हैं. श्रुति मीन्स समथिंग विच वी कैन हियर. सो वेदास इज लाइक समथिंग विच अ पर्सन लर्न बाय हियरिंग इट and then by just remembering it into his mind. So Shruti is also a word considered for Vedas. You can remember this, you can quote this. This can fetch you some more points. ओके, नेक्स्ट थिंग विच वी हैव टू अंडरस्टैंड इज कि जो ओरल मेथड ऑफ टीचिंग होता था ये घर से ही शुरू हो जाता था. इसके लिए आपको पर्टिकुलर गुरुकुल जाने की जरूरत नहीं है. जो गुरुकुल ज़्यादा स्कूल जो वैदिक टाइम्स में होते थे, तो स्टूडेंट को गुरुकुल के पास जाना होता था, और वो आजकल के स्कूल की तरह नहीं होता है कि सुबह गए और दोपहर में वापस आ गए. इट वॉज अ हॉस्टल, काइंड ऑफ हॉस्टल फ्रॉम विच यू कैन नॉट कम बैक अंटिल यू हैव अटेन योर एजुकेशन. अभी तो हॉस्टल में क्या होता है कि भाई समर वेकेशन विंटर वेकेशन में बच्चे घर आते हैं, बट इट वॉज नॉट दैट काइंड ऑफ हॉस्टल. ठीक है, वन पॉइंट इज दिस. सो जो हमारा ओरल मेथड है ये बचपन से शुरू हो जाता है, घर पे शुरू हो जाता है. जो घर के हमारे ऋषि होते हैं, दे यूज टू कम होम और वो बच्चों को पढ़ाते हैं. अपार्ट फ्रॉम वॉट एवर वी हैव डिस्कस्ड रिगार्डिंग द सब्जेक्ट and the method of teaching, one of the important thing is that teachers बहुत ज़्यादा फोकस करते थे, जो मैंने पहले भी मेंशन किया, ऑन प्रोनाउंसिएशन. ठीक है, अब प्रोनाउंसिएशन क्योंकि लैंग्वेज संस्कृत थी तो संस्कृत का प्रोनाउंसिएशन प्रॉपर होना चाहिए. उस वर्ड को समझने के लिए संधि समझाई जाती थी, समास समझाया जाता. संधि समास आप सब लोगों ने अपने स्कूल में पढ़ के रखा होगा, तो इससे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता था. अगर एक वर्ड को हम बीच में ऐसे तोड़ देते हैं तो दो नए वर्ड बनते हैं, उनका मीनिंग समझना. दैट इज संधि समास. मतलब अगर हम कोई दो वर्ड ज्वाइन कर रहे हैं तो उसका क्या मीनिंग आ रहा है, वो समास होता है. तो ये सब चीज़ों पर बहुत फोकस किया जाता था. Very important thing and very good thing which I really like about Vedic education is that Vedic education like had no we can say that Vedic education considered everyone equal. Okay, women were given very important status in the Vedic education. They were considered in a way we can say equal to men, or it will be not wrong if I say they were considered higher than men. It was considered the man is incomplete until he has women like the support of the women and the knowledge of the women. So that is why women were trained same as man. ऐसा कोई भी सब्जेक्ट नहीं होता था which man is taught but woman is not taught. So सारे सब्जेक्ट्स दोनों को इक्वली पढ़ाए जाते थे, एक जैसे पढ़ाए जाते थे, एक जैसा ही सबका एनालाइजिंग चीज़ होती थी कि कैसे गुरु उनको एनालाइज कर रहे हैं, कैसे उनको ये बता रहे हैं कि कौन कितना एफिशिएंट है. दैट इज़ वेरी गुड. और वैदिक टाइम्स में हमारा कास्ट सिस्टम भी नहीं था. सो एवरी वन वॉज गिवन इक्वल टाइप ऑफ एजुकेशन. जब बच्चे गुरुकुल में जाते थे, चाहे वो एक राजा का बेटा हो, चाहे वो एक गरीब इंसान का बेटा हो, सबको सेम कंसिडर किया जाता था. अगर एक राजा का बेटे को सुबह उठ के वो काम करना है, सेम वर्क जो एक गरीब फैमिली से बच्चा आया उसको भी सेम वही चीज़ करनी है. So this is one of the most nice thing about Vedic education. So I think in this video you have got a small introduction about the whole system of Vedic education. If you have understood, then keep watching such videos on my channel. It will help you to write your answers. These videos are mostly made for the students who are doing their B.Ed course and have enrolled themselves in BAeducation. Apart from them, of course, for everyone, these kinds of information is quite necessary. So take care. See you soon for the next session. Bye-bye.